अस्सलामुअलैकुम। आज मैं एक रिएक्शन वीडियो बनाने जा रहा हूँ द वर्ल्ड इन 2050 के हवाले से, और इसमें क्या है वो देखते हैं और साथ में देखते हैं कि मैं इन पर अपना क्या फीडबैक देता हूँ, साथ साथ इन दी एक्शन, ताकि पता लगे कि कौन सी टेक्नोलॉजी बनाई जा रही है या बनेगी, ये एक्सपेक्टेड है, और उसके हवाले से क्या मेरे ख्यालात हैं। आपको मिलेगा रिएक्शन में एक्शन और एक्शन में रिएक्शन। ये रिएक्शन ऐसा होगा इंशाल्लाह कि आपने ऐसा रिएक्शन में एक्शन और जैक्शन शायद कभी ना सुना हो, क्योंकि मैं जा रहा हूँ मिक्स करने के लिए इन टेक्नोलॉजीज़ के साथ दीन इस्लाम की रूहानियत को, वीडियो गेमिंग की वर्ल्ड को और मॉडर्न टेक्नोलॉजी को, और साथ में इस कायनात के अंदर मौजूद रियलिटी बेस्ड इवेंट्स को। तो देखते हैं कहाँ पे कौन सी चीज़ क्लिक करती है। अल्लाह के फजल से मेरे साथ रहिएगा, शुरू करते हैं। By 2050, our planet will be a vastly different place. Robots, computers. By 2050, artificial intelligence will be everywhere. AI-driven stores will allow you to purchase goods without cashiers or waiting lines. AI will diagnose and treat patients, manage transportation, and analyze massive quantities of data. AI chatbots and voice recognition systems will sound like and behave just like real people. AI will be implemented into robots. By 2050, robot dogs and other pets will serve as companions. Robots will dominate factories and begin to serve as teachers, cooks, pharmacists, law enforcement officers, athletes, and other professionals. In 2050, universal translators will remove all language barriers and voice recognition. ये बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी आने के है, जैसे आप वीडियो गेम खेलते हैं और आपके साथ आपके कैरेक्टर्स के मिनियंस होते हैं, जैसे सपोज कि आपने अगर पबजी खेला हो, जैसे उसके अंदर आपके साथ कोई पेट होता है, पेट्स आप समझते हैं ना, उस टाइप के पेट्स, और टेक्नोलॉजी की बेस पर आपके साथ गैजेट्स जैसे डोरेमोन के कार्टून के अंदर हो जाते हैं। तो ऐसे टाइप के गैजेट्स और फला टाइप की चीज़ें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर की बेस पे आपको मिलने वाली हैं, जिसको आप देखेंगे, बल्कि देखेंगे नहीं, आप उनके साथ खेलेंगे और खेलते में आपको लगेगा कि ये तो आपके रियल टाइम के पेट्स हैं जो आपकी तरह आपके साथ खेलते हैं, कूदते हैं। तो आपको शायद अकेले में रह के डिप्रेशन में कमी आने का इम्कान ज़्यादा है, क्योंकि अकेले रहने वालों को डिप्रेशन पड़ जाता है ना। तो मिनियन आप खरीद सकते हैं। चलें आगे चलते हैं। Mission will be ubiquitous. Hundreds of sensors will be installed in our clothes, homes, and overall environment to monitor our well-being and improve our lives. Computing will change. By 20 अब भैया ये पूरे आपके कंप्यूटर में, मतलब कंप्यूटर को कपड़ों के अंदर लगा के और हर जगह आपके लगा देंगे सेंसर्स टाइप की चीज़ें कि आपकी डिटेक्शन हो, ट्रैक्शन हो, और आप जदीद मॉडर्न रोबोट खुद ही बन जाएं, और आप देखें कि कौन सी चीज़ आप वर्जिश करते हुए जा रहे हैं। आपका मीटर चलता जाएगा, आपको पता लगेगा अरे दौड़ने में इतनी रफ्तार है और चलने में इतनी रफ्तार है, इतना दौड़ना, इतना चलना, इतना थकना है। आगे चलते हैं, चलें चलें चलें। 2050, we may run on quantum computers. Based on the properties of quantum physics, quantum computers could deliver massive leaps in computing power, outstripping any current transistor-based models. AI and computers will integrate into humans. Brain chips like Elon Musk's Neuralink will treat neurological disorders like Alzheimer's, Parkinson's, spinal cord injury, and blindness. These brain chips will allow people to control computers and prosthetics with no physical interaction. By 2050, we may be controlling things with our minds and communicating through brain signals. By 2050, robotic prosthetic बताना चाह रहा है भाई कि 2050 तक में माइंड से ही सिर्फ चीज़ों को कंट्रोल करने वाली चीज़ की पॉसिबिलिटी है, और इस पॉसिबिलिटी के साथ साथ ये है कि जो मशीनें हैं और चीज़ें हैं उनको इंसान अपने दिमाग की बुनियाद पे कंट्रोल करके चला सकेगा, ये हिला सकेगा। लेकिन अभी ये लोग बहुत पीछे हैं इस टेक्नोलॉजी के अंदर, क्योंकि दीन इस्लाम के अंदर इससे ज़्यादा हाई फाई टेक्नोलॉजी है 21st सेंचुरी के अंदर। और वो आप अगर जाएँ आपको पता लगेगा लेजेंडरी फ्रीलांसर जो आया अल्लाह के फजल से घर बैठे ही क्या कर रहा है, वो घर बैठे ही बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करके दिखा चुका है। और इसके अलावा लेजेंडरी फ्रीलांसर जो सर्विस दे रहा है वो घर बैठे ही दुनिया के अंदर कहीं पे मौजूद मरीजों को ठीक
ये तो अभी कंट्रोल कराएंगे ना ब्लाइंड और उनको कि हेल्प मिलेगी, लेकिन वो तो उनको ठीक करने की सर्विस दे रहा है, वो कहीं भी दुनिया के अंदर हो। अब ये कैसे हो रहा है, ये तो आपके सामने टेक्नोलॉजी है। अभी इनकी प्रेडिक्शन 2050 की है, लेकिन दीन इस्लाम में टेक्नोलॉजी में मुस्लिम इनसे बहुत आगे हैं। आगे चलिए। may be stronger and more advanced than our own biological ones. Prosthetic eyes and ears will enter the market, curing blindness and deafness. And in 30 years, ये ब्लाइंडनेस डेफनेस में हेल्प करने जा रहे हैं और लेजेंडरी फ्रीलांसर जो है वो ब्लाइंडनेस और डेफनेस को ठीक करने की सर्विस अभी से दे रहा है। अब बताएं, ये 2050 में जाने के प्रेडिक्शंस कर रहा है और 21वीं सदी में ये मुमकिन हो चुका है अल्लाह के हुक्म से। like AI, virtual reality will be everywhere. People will try on clothes in virtual reality closets, and holograms will bring FaceTime to a new level. ये यहाँ मैंने पॉज किया इसलिए कि बड़ी मजे की बात है। ये क्या कहते हैं कि ये आपको दिख रहा है क्या हो रहा है कि एक जगह पर कोई रियल में नहीं है, लेकिन वो वर्चुअली वहाँ पर मौजूद है, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, वहाँ पर बैठ के बात कर रहे हैं और जब बात खत्म हुई डिस्कनेक्ट हुआ, चल भाई चल, वो इधर वो उधर। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एक जगह पे बैठे हुए दूसरी जगहों पे अपने आप को नमूदार कर लेना। किसके जरिए? ज़ाहिर टेक्नोलॉजी के जरिए। लेकिन जब यही वाली बातें माजी की किताबों के अंदर औलिया अल्लाह के हवाले से आती हैं तो हमारे ही मुसलमानों को हैरत होती है कि अगर वो एक जगह पे थे तो उसी जगह बैठे हुए दूसरी जगह पे नमूदार कैसे हो गए। यार अगर आपकी टेक्नोलॉजी में इन गोरों की प्रेडिक्शन में ये पॉसिबल है और यहाँ तक ये पहुँच ही चुके हैं, तो अब ये तो अभी पहुँच रहे हैं। इधर तो दीन इस्लाम के सुपर हीरोज गुजर चुके हैं। अरे उनके पास तो बातनी इल्म होता था, उसको यूज़ करके, जैसे ये भी तो ये टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं ना, हाँ, तो उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए उससे पॉसिबिलिटी बन रही है कि ऐसे कैसे कैसे होगा। तो वो आपको पता नहीं है तख्ते बिल्किस का वाक़या, तख्त पलक झपकते में यहाँ से वहाँ पहुँचा कैसे? किताब का इल्म था। तो किताब का इल्म जिनके पास होते हैं और मुख्तलिफ उलूम होते हैं, क्योंकि इस कायनात में अल्लाह के बड़े मुख्तलिफ और पुरअसरार बंदे होते हैं, जब उनके पास जो कुछ होता है हर एक के पास अलग अलग भी होता है और किसी को किसी और के बारे में पता भी नहीं होता है, क्योंकि अल्लाह के बड़े बड़े अजीब व गरीब बंदे हैं, अजीब व गरीब कायनात है। इसलिए जो माजी के बड़े गुजरे लोग कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता था, मैं कहता हूँ अगर ये हो सकता है और ये पॉसिबिलिटी पे जा सकते हैं तो फिर वो भी हो सकता है और वो भी कर सकते थे। फ़र्क ये है कि हमें पढ़ के हैरत होती है कैसे होता है, लेकिन हम आंखों से देखें तो पता लगता है नहीं साइंस से होता है। तो साइंस क्या चीज है भाई? एक इल्म। आगे चले। VR platforms will allow you to move around while staying still. We will be able to travel the world and experience life on other planets, all from home. क्या बताया भाई ने? घर पे बैठे बैठे हम ट्रेवल कर सकते हैं कहीं पर भी प्लैनेट्स में, दुनिया में इधर उधर कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं घर बैठे बैठे। अरे नोट करना ये लफ्ज़ घर बैठे बैठे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि लेजेंडरी फ्रीलांसर यही तो सर्विस दे रहा है 21वीं सदी में आकर कि घर बैठे बैठे वायरलेसली दुनिया के अंदर पूरे ग्लोबल विलेज के अंदर। वो तो कह रहा है अभी पता नहीं कहाँ कहाँ ट्रेवल कराएंगे, वो कह रहा है घर पे बैठे बैठे वो दुनिया के अंदर कहीं पे भी लाइलाज मरीज मौजूद हो उनको ठीक करने की सर्विस दे रहा है। कोरोना दुनिया में कोई भी कोरोना वायरस में गिरफ्तार हो रहा है, वो कह रहा है कि घर पे बैठे बैठे कोरोना ख़त्म करा लो। कोरोना वायरस के मरीज़ को ठीक कर चुका अल्लाह की ताकत से अपनी लेजेंडरी टीम के साथ। ये कोरोना वायरस हो लेजेंडरी क्यूर सर्विस के अंदर आता है और घर बैठे बैठे वो सर्विस दे रहा है बहुत सारी वायरलेस टेक्नोलॉजी की सर्विस, ट्रांसफॉर्मेशनल एंड स्पिरिचुअल वायरलेस सर्विसेज। तो आप जाके देखिएगा ज़रूर, क्योंकि अभी साइंस वाले इसमें बहुत पीछे है, जहाँ पे लेजेंडरी फ्रीलांसर अल्लाह के फजल से है और उसके साथ जो लेजेंडरी टीम का ताउन है अभी ये बहुत आगे है, जिसमें साइंस अभी बहुत पीछे है। मुस्लिम्स टेक्नोलॉजी इज फॉर विनिंग। लेट्स मूव ऑन। In 2014, 320,000 new electric vehicles were registered around the world. In 2019, that number was 2.3 million. By 2025, global EV sales are projected to surpass 10 million. And by 2050, the majority of automobiles will be electric. Gas stations will disappear and be replaced with at-home charging stations, refueling vehicles in as low as 10 minutes. Automobiles will become driverless. Wow. As of now, Tesla vehicles already have autopilot features that achieve level 2 automation on the Society of Automotive Engineers Vehicle Automation ranking. Other companies, such as Google, have invested billions of dollars into self-driving technology. Currently, it's expected that fully autonomous level 5 vehicles will roll out to consumers in the late to mid-2020s and become commonplace in the 2030s. By 2050, people will be hopping into cars with no steering wheel.
Thousands of autonomous vans and semi-trucks will travel cross-country, delivering packages and shipments with no human interaction. Drones will do the same for shorter distances. By 2050, swarms of drones will be delivering small packages from floating or vertical warehouses. There will also be surveillance and security drones, along with drones for construction, entertainment, and agriculture. eVTOLs, or electric vertical takeoff and landing aircraft, will provide urban transportation. Currently, there are several working eVTOL aircraft prototypes. The urban market for them is massive, and studies have revealed that the technology could become highly profitable. कैसा लग रहा है ना? ओह. One of the companies working on eVTOLs is Uber, who wants to make aerial ride-sharing a reality. There's also Airbus, who have their drone-like Airbus pop-up concept. If Uber, Airbus, and other companies succeed, we could see widespread adoption of the technology. By 2050, cities will likely have air taxis everywhere. But that may not work. Elon Musk says that roads must go 3D, which means either flying cars or tunnels. He believes the answer is tunnels. Right now, Elon Musk's Boring Company is digging small, experimental tunnels under cities. If Musk can significantly cut down boring costs, by 2050, cities will have thousands of tunnels underneath them. Another one of Musk's brainchilds, Hyperloop, will revolutionize long-distance land transportation. Hyperloop, the idea for vacuum maglev high-speed trains, ओए नीचे जमीन के अंदर में ये लोग कार चलाने की तरफ और ये ट्रेन की रफ्तार जरा देखें आप ये किधर जाने की सोच रहे हैं ये लोग could speed up to 700 miles per hour. A trip from Los Angeles to San Francisco would be only 43 minutes long, compared to a 6-hour car ride. By 2050, Hyperloop systems will certainly be constructed, and replacing airplanes may evolve into the most popular type of long-distance domestic travel. But for travel between continents, airplanes will remain dominant. With improved batteries, we could see electric airliners take to the skies. In addition, several companies are working to bring back supersonic aircraft. These aircraft are certainly not airliners, but small-scale jets meant to carry only 10 to 100 people. By 2050, we could have Concorde-like, but safer, supersonic aircraft soaring through the skies. Or, as an alternative to airplanes, what if we traveled around in rockets? Well, Elon Musk wants to use his Starship to transport people all around the world soon. In Musk's Starship, one could travel from New York to London in only 29 minutes. रिएक्शन भी ऐसी की तैसी कर दिया यार हाँ जी जहाज में बैठ के उड़ना हो या आपको रॉकेट में बैठ के उड़ना हो आपको रॉकेट में भी उड़ाने के लिए ऑप्शन आने का इम्कान है लेकिन पता नहीं पाकिस्तान में क्या होगा आपको शायद गधा गाड़ी पर जब तक जाना होगा या गाड़ी और साइकिल पे चलना होगा लेकिन अभी उधर के प्रेडिक्शन चल रही हैं 2050 की पाकिस्तान में मुझे अभी नहीं लगता कि आप रॉकेट में बैठ के सफ़र कर सके इसलिए आपको बसों में धक्के खाने पड़ेंगे अगर चलना है या रक्षो गाड़ियों के अंदर लेकिन आगे चलते ही एनर्जी अपील आ गया देखते हैं एनर्जी अप ईवल क्या है भाई ये Our energy system is transforming. Over the past decade, the cost of solar power has plummeted. Due to economies of scale and improved technology, the price of solar equipment has dropped by 89% since 2010. The cost for wind power has plunged as well. Due to these decreases, new solar and wind investments are usually cheaper than natural gas and coal investments. However, renewables still have one major setback: energy storage. For utility-scale systems, renewables need a way to store excess energy from windy and sunny days for cloudy and calm days. To help with this, researchers are developing new methods to store large amounts of energy. Some examples include storing energy as heat in materials, compressing air, or turning air into a liquid. Although it remains to be seen which method is best, these solutions will certainly be implemented for large-scale utility in the future. By 2050, renewables are expected to provide nearly half of all world electricity. But that's not all. As solar and wind begin to dominate the energy sector, fusion power will rise. Currently, fusion power is purely speculative. However, 35 nations are collaborating on ITER, a $20 billion project in France to test the feasibility of fusion for power generation. Fusion ITER power will work by creating a fusion-powered plasma inside an experimental machine.
The walls of the machine will absorb the energy, using it to produce steam that will generate electricity with turbines. ITER's first plasma is planned for December 2025. By 2050, we could have fully functional fusion power plants, operating more efficiently than any other power source in history. ये तो आपके पूरे पावर एनर्जी को ट्रांसफॉर्मेशन करके एक नई किस्म की पावर लेके आने वाले हैं, यानी कि सुपर पावर। वीडियो गेम में आपकी एक पावर होती है, वो चेंज हो जाती है, एक सुपर पावर बन जाती है। ये पावर सिस्टम को चेंज करके सुपर पावर सिस्टम में लेके आने वाले, लेकिन ये वाकई में होगा कब तक होगा ये तो वक्त बताएगा, आगे चलता है। सेकंड स्पेस रेस With NASA's Artemis program, it's planning to land humans back on the moon by 2024. SpaceX, Dynetics, and Blue Origin are all working on landers for the project. After the moon, NASA wants to send humans to Mars sometime in चांद पे आने की तैयारी और उसके साथ साथ मार्स पे जाने की तैयारी, देखते रहिए। the 2030s. SpaceX is even more ambitious. They are developing the Starship, a rocket that they hope will send humans to Mars by 2024. 2024 अभी 2021 चल रहा है, 3 साल। याद रखना, ये जो प्रेडिक्शन बता रहे ना, बता देना इन गोरों को। अगर आपको भी वीडियो बनानी हो बताना तुम्हारी प्रेडिक्शन थी 2024 के अंदर तक में तुम वो मार्स पे कोई रॉकेट शॉकेट में बिठा रहे थे। अगर ना बिठाएं तो भाई आप इनको पकड़ना है जिसने वीडियो बनाई है। ये मैं तो सिर्फ रिएक्शन बता रहा हूँ, साथ में थोड़ा एक्शन जैक्शन बता रहा हूँ, नहीं सॉरी दिखा रहा हूँ। Once they get there, SpaceX plans to establish a permanent colony. By 2050, Elon Musk plans to have a Martian city with as many as 1 million people. SpaceX is also developing Starlink, thousands of satellites that will provide the world's most advanced broadband internet system. Other space companies such भाई ये मजे का लगा ब्रॉडबैंड इंटरनेट। बस ये इंटरनेट आपको फ्री में मिल जाए ना, बहुत सारा जैसे गोरों के पास होता है। ये ऐसा इंटरनेट पाकिस्तान में आपको ब्रॉडबैंड वाला फ्री वाला फ्री मिल जाए तो बहुत मजे आएंगे ना। नेट ही अच्छा लगे तो फ्रीलांसिंग अच्छी तरह कर लोगे भाई, हैं। अच्छा नेट होना चाहिए, फास्ट नेट होना चाहिए। खासतौर पर आप वीडियो एडिटिंग करने वाले हो तो फिर गोरे के लिए वीडियो अपलोड करना, डाउनलोड करना, 10 किस्म के मसले आते हैं। जीबी में, एमबीज में, और इतना बड़ा डेटा होता है। चलो देखते हैं आगे। Such as Blue Origin, Boeing, Lockheed Martin, and Virgin Galactic are all racing for space as well. In 30 years, we might have a permanent colony on the moon, space hotels in orbit, and humans on Mars. फिर ऐड चलो भाई। By 2050, our food consumption will be wildly different, mostly due to meat. Livestock contributes to 15% of human greenhouse gas emissions and uses 26% of the Earth's terrestrial surface. To feed our growing population while lowering emissions, we must move away from meat. Assisting with this are meat alternatives. Companies like Beyond Meat and Impossible Foods have obtained billion-dollar valuations, supplying the rapidly growing meat alternatives market. In addition, plant-based diets as a whole are growing in popularity. Then there's cultured meat. Cultured meat is meat produced by in vitro cell culture. It avoids the slaughtering of animals and produces very minimal emissions. By 2050, we will likely have in vitro T-bone steaks produced for the masses. To meet the demand for increased plants and the growing population while escaping the uncertainty of the changing climate, farms will move indoors, vertical, and into cities. The vertical farming market is exploding. By 2050, there will be large-scale vertical farms all around the world, feeding the growing population while using very little land and water. अच्छे खासे नेचुरल दरख्त तो पूरे इन्वायरमेंट है दुनिया में, अच्छी खासी जगह है। इनका क्या जाता है, इतनी खाली जगह मौजूद है उगाने के लिए। उगाने वाला तो वैसे ही खुद ही उगा देता है, वो तो अल्लाह है उगाने वाला। ये लगे हुए अब मशीन अपने घरों पे और इधर उधर के साथ क्या कर रहे हैं, इनको कोई अकल है? बाकी चीज़ों को छोड़ो यार, बस देखो आगे चलो। Water. As our food consumption transforms, biotechnology will advance. While prosthetics replace large organs, stem cells will regenerate injuries and diseases. Stem cells which can be guided into becoming a wide variety of आपकी इंजरी को रिकवर करने के लिए रिकवर हो जाएगी, हीलिंग करेंगे। अच्छा, specific cells will be used for therapies.
Eventually, like brain chips, stem cell therapies could help those with Parkinson's and Alzheimer's, but also those with type 1 diabetes, heart disease, burns, cancer, arthritis, and all sorts of other diseases. Another biotechnology is gene editing. ये आपके दर्द, अर्थराइटिस वगैरह इसके अंदर हवाले से हेल्प के लिए बता रहे हैं, अगर आपको ज़रूरत हो तो। वैसे इनकी तो प्रेडिक्शन भी 2050 की है, आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आप जाइएगा लेजेंडरी फ्रीलांसर पर और लेजेंडरी फ्रीलांसर से कांटेक्ट कर लेना अगर आपकी इनक्यूरेबल डिसीज़ हो। तो अभी इनकी प्रेडिक्शन तक तो पता नहीं कहाँ तक, आप शायद पता नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह करे कि आप जिंदा हो, आपकी फैमिली भी हो, लेकिन अगर आपको इनक्यूरेबल हो गए हैं और डॉक्टरों से नहीं हो रहा तो भाई कोई टेंशन मत लें, आप पहुँचें लेजेंडरी फ्रीलांसर से कांटेक्ट करें, वो लेजेंडरी फ्रीलांसर आपकी इंशाल्लाह हेल्प करेगा। लेकिन इनक्यूरेबल होना चाहिए, ये शर्त है। अगर इनक्यूरेबल की कैटेगरी में आते हैं तो फिर उस फिल्टर के अंदर आप आते हैं, अगर नहीं तो भाई फिर मुआसरत, फिर दुनिया में बहुत सारे डॉक्टर्स और बाबे शाबे मिल जाएंगे आपको। आगे चलें, जीन एडिटिंग में आ गए हम। Using CRISPR/Cas9 technology, scientists can now remove strands of DNA that are causing illnesses and replace them with different ones. In the future, DNA के अंदर रिप्लेसमेंट करने, एडिटिंग करने की तरफ चल रहा है भाई। scientists hope to cure lifelong inherited diseases with this technology. वो ये बता रहे हैं जो आपको जो विरासत से जो मिलते हुए डिसीज आती है उसको तोड़ने काटने के लिए आपका ऑपरेशन करके डीएनए के अंदर उसको चेंज करके बाहर निकालने का एडिटिंग, जैसे ग्राफिक एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, साउंड एडिटिंग, किसी की राइटिंग में एडिटिंग होता है ना, तो ऐसे डीएनए में एडिटिंग करना भाई। वो आप उनकी सोच देखें, वो कहाँ एडिटिंग करने चले हैं। क्लाइमेट चेंज सोल्यूशन आ रहा है, नेचर, मेरे कान खड़े हो गए मेरे इस नेचर क्लाइमेट के साथ। While we decarbonize the world's economy, we will utilize carbon removal technology. Carbon capture and storage will catch carbon emissions from a source and then transport them underground, leaving the atmosphere unaffected. Advanced technologies will remove carbon directly from the air and seawater. Additionally, some minerals naturally react with carbon dioxide, and we can use them to convert carbon from gas into a solid. It's not sure which of these strategies is best, but in the future we will certainly see their widespread implementation. If you enjoyed this video, it would be amazing if you... Amazing enough भाई, मेरे को ज़रा अपनी फीडबैक देने तो आपकी अमेजिंग हो गई। ये था आज का मेरा रिएक्शन अल्लाह के फजल से, जिसमें मैंने आपको कुछ बताया, कुछ दिखाया, कुछ समझाया, और पता नहीं प्रोडिक्शन का भी इन्होंने भी कुछ बताया। आपने क्या सीखा, आपको कैसी लगी मुझे नहीं पता। आप अपना फीडबैक तो नीचे कमेंट में देंगे कि आपको कैसी लगी। अपना फीडबैक देते रहिएगा और बताइएगा आपको कैसा लगा ये रिएक्शन और एक्शन में जैक्शन। आगे देखते हैं और कौन सा रिएक्शन कभी आता है। अभी तो अपने फ्यूचर का तो किसी को पता नहीं होता। फिलहाल आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखना, मुझे इजाज़त दें। मैं था ज़ीशान अरशद और देखते हैं अगला रिएक्शन कौन सा होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।